Very good morning, friends. I hope you're all safe and healthy. Pretty chilly in Delhi, I guess, and it's been quite cold, I think, these days. And that's the reason, I've been wearing a heavy jacket for the past quite videos, I guess. So, finally, I think in this month we've been discussing quite a bit in terms of Indus 1 and connecting the Indus 1 to Schedule 3 Division 2 as well. In the previous video, I was talking in terms of statement of changes in equity, and I had talked about the three tabs which you can see on the top of the SOCE. Now today in this video, what we're going to look at the particulars column of the statement of changes in equity, in which case we can see, yes, there are typically, you can say, three sections again in which I could divide my particulars, though I've divided this only in two strips. But we can technically, divide even the SOCE on three. So technically, if you ask me, it's like a 3 by 3 matrix if you look at the statement of changes in equity. So let's look at the particulars of SOCE in this particular video. जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं सीए फाइनल मई 22 और नवंबर 22 के लिए, उनके लिए नए साल में शुरू होने जा रहा है योद्धा सीए फाइनल ग्रुप 1 का बैच। योद्धा इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप इन एग्जाम्स को एक वॉरियर की तरह क्रैक कीजिए। 5 जनवरी से जितने भी आपके सीए फाइनल के ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सब कवर मिलेंगे, जिनके अंदर आपके साथ अलग अलग टॉप एजुकेटर्स जुड़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जिनमें लॉ अमित पोपली सर, राहुल मलकान सर एसएफएम, खुशबू सांघवी मैम ऑडिट, और मैं आपके साथ लूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टाइमिंग्स इन सब्जेक्ट्स के अलग अलग हैं जिनमें कोई क्लैश नहीं है। एसएफएम में राहुल मलकान सर लेंगे सैटरडे और संडे 8 to 1 PM, और मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे 6 to 8 AM। लॉ की क्लासेस अमित पोपली सर लेंगे 7 PM to 9 PM, और ऑडिट के अंदर खुशबू सांघवी मैम का बैच रहेगा 10 AM to 12 PM। तो क्लासेस में आपको कोई क्लैश नहीं मिलेगा, ये सभी क्लासेस आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनेक फायदे हैं। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, यदि आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर आप अनलिमिटेड एक्सेस पाएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन। साथ में आपको इसके अंदर मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध होंगी। ये कुछ प्राउड लर्नर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपनी क्लासेस ली, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, और आप भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। बस थोड़ी सी सूझबूझ और प्लानिंग की आवश्यकता है। अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं जो आपके बजट को और जो आपके टाइमिंग को सूट करता हो। फ्रॉम 3 months ऑनवर्ड्स आप ये प्लान्स अवेल कर सकते हैं, जिन पर आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं, और इस डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CAKB10। आपको इन पर इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से ग्रुप 2 के भी अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों ग्रुप्स के अंदर भी आप ये प्लान्स अवेल कर सकते हैं। जो आपके प्लान्स को, आपके बजट को सूट करे, यू कैन टेक दीज प्लान्स, और इन सभी प्लान्स पर आप अवेल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट। इन सभी क्लासेस के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर दीज प्लान्स एंड अवेल अ डिस्काउंट एज वेल। तो किस बात का इंतजार है, आइए लेट्स क्रैक इट। What I have done, I have actually cut down the schedule 3 statement of changes in equity format, and I've divided this into 2 strips. But as I said, you can technically look at the particulars in terms of 3 portions. Now this is the first portion on the particulars column. We see that there is a balance at the beginning of the reporting period. So let's say if you are looking at the year 2021, there is the year 2021 as a base, then the opening balance is on 1st April 20. Now there could be certain errors which might have occurred in the past,
and they are located in the current year. So that means to the extent the opening balance is incorrect, so there is a need to restate that opening balance. There could be certain changes in accounting policies which might be done, and the companies would be required to make the changes in accounting policy with a retrospective effect in terms of Ind AS 8. So all the changes in accounting policies and any rectifications of the prior period errors, which are both done with a retrospective impact because of Ind AS 10, is adjusted in the opening balance. And after making these adjustments, we get the restated balance at the beginning of the year. Interestingly, you can also see that once you are taking the impact of the prior period error rectifications and the changes in accounting policies, these are not taken in the profit and loss. Unlike in terms of IGAAP, the changes in accounting policies and the corrections of the errors used to impact the current year profits. But in terms of Ind AS, these items are being directly taken in the SOCE, and we are making a restatement of the opening balances. So these items would not enter the P&L. They would not impact the profit or loss for the year, neither they would impact the earning per share as well. So this is, we can say, is one aspect of the particulars column, restatement of the opening balances for the changes in accounting policies and the rectification of prior period errors. Then we can see in the particulars, the second component is that you are adding the total comprehensive income for the year. Now, if you remember in one of the videos in Schedule 3, that is, I would say, before this video, I made the first video on the income statement where I connected that the total comprehensive income is the point number 15 in the profit and loss section. So this total comprehensive income is going to be added to the restated opening balance. That's like, you can say, the aspect number 2. And then naturally there could be certain appropriations as well. So you can see the dividends, the transfer to retained earnings, or any other changes. These indirectly becomes an appropriations, and finally you get the balance at the end of the reporting period. Which means in terms of the SOCE or the SOCE, whatever you call it, you are going to see that there are 3 blocks in terms of the left hand side. You got the opening balance, which is restated on account of changes in policy and prior period errors. Then you take the total comprehensive income, and then you take care of the appropriations, the dividends, and the transfer to retained earnings, etc. And even on the top, we've seen that there are 3 tabs. So in simple way, you can look at a statement of changes in equity as a 3x3 matrix. You got 3 things on the particulars, and you got 3 tabs on the top. That's the new format, the statement of changes in equity. Pretty interesting indeed. So I thought before I give a close in terms of Ind AS 1, let me, discuss a few aspects of the Schedule 3 as well. So that's all in this particular video. Thank you for watching. Take care and bye-bye.